Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. This is our fourth lecture in the series of investment basics, and today we'll be studying about balance sheet. Okay, so we'll be studying what is a balance sheet, then we'll be completing the components of the balance sheet, then we'll be having a look at a sample balance sheet format, then we'll study about the accounting equation. Last but not the least, we'll get take into account the limitations of a balance sheet. So let's begin. What is a balance sheet? When we are talking about a balance sheet gives us an idea about the company's finances at a specific point. What do you mean by company finances? Like the all the finance or all the money that the company owes to all the vendors, or all the money that the vendor or the creditors, or what do we say, the debtors, owe to the company. So when we are talking about creditors, we are talking about, what do we say, company owes money to the creditors, and when we are talking about debtors, debtors owes the money to the company. So what are debtors? As I said, जो भी लोग कंपनी को, जिन लोगों को भी कंपनी को पैसा देना है वो डेटर्स, जिन लोगों से कंपनी ने पैसा लेना है या जिन लोगों ने कंपनी को पैसा देना, दोज आर डेटर्स. ऑल दोज पीपल जिनको कंपनी को पे करना है, या जिसे बोलते हैं कि कंपनी ने कोई सामान लिया है, कोई मटेरियल लिया है क्रेडिट पे फॉर अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, and company owes money to those people. Those are creditors. Okay. Second of all, balance sheet gives us an idea about the financial health of the company. Okay. So in order to identify this financial health of the company, there are various measures or various analysis, basically in the form of ratios that are conducted by any qualified personnel, and we'll be studying about the ratio analysis in the upcoming videos. Okay. Another thing is that since we clearly mentioned that balance sheet gives us a idea about the finances of the company at a particular specific point. Okay, it's not like the balance sheet is a dynamic balance sheet has a dynamic nature. It's a kind of a static thing. So we cannot compare, like we cannot day to day operations may we cannot keep on just, what do we say, updating the balance sheet. यार आज तक ये है वो है वो. It has to be at a specific point. Either it has to be yearly or quarterly. Okay, generally it is yearly, and whatever comparisons or whatever, what do we say, analysis is made, it is done basically quarter in a comparison with the quarter for the next previous year. Okay, we cannot make projections on the basis of balance sheet. For the projections, if you remember, we were using income statement. Okay, the detailed what do we say, the video of income statement we have already covered in the previous lecture, and I'll definitely copy paste the link for that lecture in the description box. Okay, moving ahead, again, a very important thing about balance sheet is, since different companies have different businesses and their financing structure might be different, so it has to be noted that balance sheet of a particular industry has to be compared within the same industry. Like suppose you cannot compare a balance sheet of a real estate firm to a banking firm, or to a real estate firm, sorry, to a, what do we say, hospital firm, or any other different industry firm. Okay, आगे चलते हैं. This is the most important slide that we'll be actually covering today, and this defines the balance sheet as a whole. So let's have a look at the components of a balance sheet. There are basically three components of the balance sheet: assets, liabilities, and owner's equity. What are assets? Let's first take into account what are assets, what are liabilities, and what is an owner's equity. If you guys would be actually following me on YouTube and on Instagram as well, I have actually defined assets and liabilities and owner's equity in shorts that I have uploaded in there. But let's repeat it again. Have a look at them once again. Assets. Assets, as the name suggests, is something which has some future benefits for the company. जिस कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी को किसी भी तरह से बेनिफिट कर सकती है इन द नियर टर्म फ्यूचर और लॉन्ग टर्म फ्यूचर, दोज आर एसेट्स. Liabilities are nothing but obligations of the company. Can be future obligations, can be immediate obligations. Okay. Owner's equity, as the name suggests,
ओनर ने या शेयर होल्डर्स ने या प्रमोटर्स ने कंपनी में कितना पैसा डाला है, दैट इज द बेसिकली द ओनर्स इक्विटी. आई होप यू गाइज मस्ट बी क्लियर टिल नाउ. व्हाट whenever we talk about equity, we are talking about some partnership. Oh, sorry, we are talking about some part of ownership, or we are talking about some percentage share in particular company. Okay, let's look at assets first. Assets comprises of cash and cash equivalents. I guess I don't have to tell you what a cash and cash equivalents, hard money in the banks. And cash equivalents can be anything like which can be easily converted into money, like high credit worthy bonds, can be like shares, can be investments which are highly liquid. Then comes marketable security. Shares will be coming in the marketable securities, and highly liquid debt instruments also comprises of marketable securities. Then we are talking about accounts receivables. What are account receivables? अकाउंट रिसीवेबल्स आर नथिंग बट जो भी पैसा या जो भी डेटर्स हैं कंपनी के, या जिनसे भी कम जिन जिन लोगों से भी कंपनी ने पैसा लेना है इन द कमिंग ईयर और मे बी समवेयर डाउन द लाइन, देन कम्स दोज ऑल कम्स अंडर अकाउंट्स रिसीवेबल्स. इन्वेंट्री, कंपनी की जितनी भी इन्वेंट्री रखी है, दो इट इज़ नॉट immediately cannot be immediately supplied to cash or cannot be immediately converted to cash, it's an asset. Prepaid expenses, वो सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी ने लेट्स सपोज एडवांस में पे कर दिए हैं, क्योंकि वो अब वो एक तरह से एसेट्स हो गए हैं कंपनी के, वो सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एज आई सेड again, it will be for the benefits of the company. Fixed asset comprises of land, machinery, or what do we say, office furniture and everything. Then we are talking about intangible assets. Intangible assets comprise of all the intellectual property rights like patents, copyrights, trademarks that the companies own, maybe goodwill even. Okay, so those are intangible assets. Whenever we are talking about assets को हम further divide करते हैं current assets and long term assets में. Okay, current assets comprises of all the components जो भी कंपनी को benefit करेंगे within a year down the line, जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड टू एन एक्सटेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस. बाकी जो तीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स, दो एंड इंटेंजिबल एसेट्स, दो कंप्राइजेज ऑफ फिक्स्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स. Similar to assets, liabilities are again divided into current liabilities and long term liabilities. करंट लाइबिलिटीज़ में आ गए इंटरेस्ट पेबल, जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, वेजेस जो पे करनी है, अकाउंट्स पेबल जो क्रेडिटर्स को पैसे पे करना है, शॉर्ट टर्म डेट कोई भी ऐसा कर्जा या लोन जो विद इन ईयर डाउन द लाइन पे करना है. डिविडेंड्स पेबल अगेन कैन बी अंडर जनरली केप्ट अंडर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है. लॉन्ग टर्म डेट, वो सारा लोन या वो सारा जिसे बोलते हैं कि डेट जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में 5 years 3 years डाउन द लाइन पे करना है. पेंशन फंड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. पेंशन फंड इज बेसिकली when we'll study about what do we say pension expenses and everything, तब हम लोग पेंशन फंड को और डिटेल में पढ़ेंगे. बट जनरली होता क्या है, जैसे दो तरह के प्लान होते हैं, डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जो कि कंपनी मेंटेन करती है एक पेंशन अपने एम्प्लॉयज़ की पेंशन के लिए. सो कंपनी क्या करती है, हर ईयर एक ईयरली कमिटमेंट करती है कि भाई मैं इतना पैसा पेंशन अकाउंट में डालूंगी या पेंशन फंड में डालूंगी. ठीक है, बाकी उसका नेचर क्या है, डिफाइंड बेनिफिट है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, बस ईयरली एक कंट्रीब्यूशन कमिट करा जाता है कंपनी की तरफ से कि हाँ भाई इतना पैसा डालना है. फिक्स नहीं हो सकता, फिक्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट. ओके, फिर आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डीटीएल की जब भी हम बात करते हैं, इट इज़ नथिंग बट कि कंपनी ने अभी लेट्स सपोज कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से टैक्स बना था, ठीक है, वो ज़्यादा था, वो जो एक्चुअल टैक्स पेबल था वो कम था. ओके, एक एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है, तो कंपनी ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया. अब अगर ज़्यादा टैक्स पे कर दिया तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रॉबिलिटी कि इन फ्यूचर वो जो टैक्स है कंपनी के पास वापस आएगा. तो ये कहलाता है डिफर्ड टैक्स एसेट. तो दिस गोज अंडर एसेट्स कॉलम. अगर ये उल्टा हो जाता है कि ज़्यादा टैक्स था कंपनी ने कम पे करा है, वो जो डिफरेंस है दैट कम्स अंडर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. एंड एक्चुअली इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, क्योंकि बाद में आगे चल के कंपनी हैज़ टू पे दैट. ओके, देन वी कम टू ओनर्स इक्विटी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनर्स इक्विटी, एज वी सेड, ओनर्स इक्विटी इज़ नथिंग बट कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करा, दैट कंप्राइज ऑफ ओनर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी. रिटेन अर्निंग्स, कंपनी, इफ़ यू रिमेंबर रिटेन अर्निंग्स हमने जब इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें हमारा जो लास्ट का जो पार्ट आया था डिविडेंड हटाने के बाद, दैट वाज द पार्ट दैट गोज टू रिटेन अर्निंग्स.
That becomes a part of the shareholders equity or owners equity. And actually this is shareholders equity, retained earnings, which actually forms the net worth of the company. Okay. Then we are talking about treasury stock. ट्रेजरी स्टॉक आपने बहुत सुना होगा कि यार कंपनी बायबैक इशू कर रही है, बायबैक अरेंज कर रही है, जैसे अभी लेट्स सपोज लेटेस्ट टीसीएस का बायबैक आया हुआ, जो भी शेयर्स कंपनी बायबैक से खरीदती है उनको वो एक ट्रेजरी स्टॉक में डालती है. प्रेफर्ड स्टॉक, again if you remember our second lecture we studied about when we studied about the classification of the shares, we studied about preferred stock. So again you can find the link for that lecture in the description box. एडिशनल पेड इन कैपिटल, कोई भी कैपिटल या कोई भी अमाउंट जो कंपनी ने अपनी शेयर होल्ड इक्विटी के अलावा डाला है, दैट कम्स इन द एडिशनल पेड इन कैपिटल. अब हमने एसेट्स पढ़ा, लायबिलिटीज पढ़ा, ओनर्स इक्विटी पढ़ा. बैलेंस शीट को बैलेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि द एसेट साइड्स हैज टू बी बैलेंस विद द लायबिलिटीज एंड द ओनर्स इक्विटी साइड, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन एज वेल. ओके, अभी इस पे बाद में आते हैं. सो दिस इज बेसिकली व्हाई बैलेंस शीट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन. द एसेट्स on the balance sheet has to be, the sum of all the assets has to be equal to the sum of the liabilities as well as the shareholders equity, and this is also known as the accounting equation. Okay, अब बैलेंस शीट्स को एक बार देख लेते हैं. इस तरह का एक बेसिकली रनिंग फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डेफर्ड इनकम टैक्सेस आया, हमने डीटीए पढ़ा था, डेफर्ड इनकम टैक्स, वो डीटी यहाँ पे जो आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा. ठीक है, ये आ गया आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीएल और DTA, deferred tax liability and deferred tax assets. Okay, please have a look at this. Okay, so last but not the least, let's look at the limitations of the balance sheet. अभी जैसे हमने पढ़ा था कि since balance sheet is very static in nature and it is prepared at a specific point in time, it can only be compared in the past. We cannot make detailed what do we say projections based on the balance sheet. उसके लिए if you remember we were using income statement जहाँ पर हम लोग revenue और profits का projections कर रहे थे. Okay, so again this, अगर आप second point देखें, this is telling you that only कि जब भी हम ratio analysis करते हैं forecasting के लिए, so जब जो भी हम figures लेते हैं वो completely balance sheet से नहीं लेते हैं, rather we take figures from balance sheet as well as the income statement, because income statement being more dynamic in nature is highly recommended or is highly used by the analyst for decision making. Okay, फिर हमने बात करी है मैनिपुलेशन की या फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस की. तो बैलेंस शीट अगेन, इसमें बैलेंस शीट की जब भी हम बात करते हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे चल के, फिक्स एसेट्स में हम लोग डेप्रिसिएशन कवर करते हैं. डेप्रिसिएशन क्या होता था? डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट विद टाइम. सो डेप्रिसिएशन को हम लोग कैपिटलाइज भी कर सकते हैं या एक्सपेंस भी कर सकते हैं. अब जनरली होता क्या है कि कंपनीज कुछ कुछ कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन को, फिर रिमेंबर हमने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस पढ़ा था जब हम EBITDA निकाल रहे थे, वहाँ से दे एक्चुअली टेक आउट द एक्सपेंस एंड दे गेट इट हियर टू एक्चुअली इन्फ्लेट द प्रॉफिट्स. सो इस तरह की प्रैक्टिसेस को एक्चुअली बैलेंस शीट की एक लिमिटेशन है कि डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन जब कवर हो आता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो राइटफुली इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. बट जनरली होता क्या है कि एज आई सेड बिफोर इवन कि प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करने के लिए कुछ कुछ कंपनीज यहाँ पे कैपिटलाइज कर देती हैं डेप्रिसिएशन को और वहाँ से एज एन एक्सपेंस हटा देती हैं. सो अगेन बैलेंस शीट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड एंड डेप्रिसिएशन को ओवर स्टेट करके या किसी भी तरह से. सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट बैलेंस शीट. Okay, so again, my appeal would be, अगर आपको ये lecture अच्छा लगा, if you really like this lecture or if you really like this video, please hit the like button. Please subscribe to my channel, and again, most importantly, please share your feedback in the comment box. Thank you so much.